Good morning, students. Now, starting with the new topic, variable types. So, before starting types of it, firstly, we should know what is variable. So, variable is what? It is a named memory location which is used to hold a value. Means what? It is a named memory location. यानी कि ये क्या होती है, जो हमारी memory होती है, memory is divided into a number of blocks, right? So इट मीन्स इट रिप्रेजेंट सम मेमोरी ब्लॉक. ये पर्टिकुलर किसी एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है. वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी ब्लॉक विच इज़ यूज टू होल्ड अ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लॉक एंड दिस इज यूज टू होल्ड अ value. So we can take here like a, right? Now a can store any type of value, depends on the data type. So it is called what? Variable. Now next is types of variable. So here we are having three types of variable. First, local variable, then instance variable and class variable. So starting with the first one, local variable, that is declared inside the method. Inside the method, or you can say inside any block. Inside any block is called local variable, right? Now, next is instance variable, a variable that is declared inside the class. Mark here, it is inside a method or inside any block. Here, inside any class, but outside the method. आउटसाइड द मेथड, ये कहाँ होते हैं? मेथड के अंदर. ये कहाँ पे होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल? दीज आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेथड बट विद इन द क्लास. Is called instance variable. It is not declared as static. We cannot declare the instance variable as the static variable. Now next is class variable. Class variable, also known as static variable. Also known as static variable. So a variable that is declared as static, जो static की तरह declare होते हैं, is known as what? Static variable, also class variable. It cannot be local. ये variables local नहीं हो सकते हैं. Now repeating one more time, types of variable. In some of the books you will get types of variable as of two types, like static and non-static. Static and non-static. So actually these two, local and instance, these are considered as the non-static variable types. ठीक है. So in some of the books you will get types as of two and in some three types. राइट. सो ये जो दोनों हैं आपके लोकल और इंस्टेंस, ये हमारे कैसे होते हैं? नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं. नाउ लोकल वेरिएबल्स आर दोज विच आर डिफाइंड इनसाइड अ ब्लॉक, इनसाइड एनी मेथड, राइट. इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लास के अंदर होते हैं बट मेथड से बाहर होते हैं. ठीक है. एंड देयर इज़ वन मोर डिफरेंस, दैट लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन. Means while you are declaring a local variable, there is a need to initialize it because they are not initialized by default. लोकल वेरिएबल खुद से कभी इनिशियलाइज नहीं होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर. ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिफाइन इट, दैट मीन्स टू डिक्लेयर इट एंड टू इनिशियलाइज इट. नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. So declaration means declaring the data types. That means to state the data type. Means if I write int a, so this is what it is, declaration. This is declaration, right? If I write a is equal to 5, so it is called what? Initialization. Initialize the value, it is called initialization, right? So it is must that if you are creating any local variable, so there is a need to initialize it while declaring it. जब आप declare करते हो तभी उसको initialize करना must होता है for local variable. So there is a restriction for it. Then instance variable जो होते हैं, the variables value, that means the values for these instance variables are by default initialized. ठीक है. Depends on the data type. Same for this also, class also. Now in detail we will study further. Moving on to the next. So variable types, here it is given local, instance and class. Class are also known as static variable. Now next is this. Now look at the first point. Local variables are declared in methods
कंस्ट्रक्टर्स और ब्लॉक्स। किसी पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर आप बना सकते हो, चाहे वो मेथड का ब्लॉक हो या कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक हो या इफ एल्स का ब्लॉक हो या इफ़ का ब्लॉक हो, ठीक है। सो किसी एक ब्लॉक के अंदर बनाए जाते हैं, दैट आर नोन एज व्हाट, लोकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज एंटर्ड and the variable will be destroyed once it exit the method, constructor or block। यानी कि लोकल वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं, व्हेन यू एंटर अ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, पर्टिकुलर बॉडी ऑफ व्हाट, बॉडी ऑफ मेथड, बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, बॉडी ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। आप जब एंटर करते हो तब वो क्रिएट होते हैं, जैसे ही आप उस ब्लॉक से बाहर आते हो एंड दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। दिस next, access modifiers cannot be used for local variables. Why? Access modifiers like public, private, protected, default, so these cannot be used for local variables because we know what ki these type of local variables are accessed inside a particular block only. We cannot access it anywhere। हम उसको कहीं और एक्सेस कर ही नहीं सकते, हमें पता है सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जहाँ उसको डिफाइन किया है, जहाँ उसको डिक्लेयर किया है, ओनली इन दैट ब्लॉक वी कैन यूज़ इट। सो दैट्स वाई वी डोंट राइट access modifier, that means access specifier means the same thing। Next point is local variables are visible only within the declared method, constructor or block, right। ये भी डिस्कस किया, क्योंकि सिर्फ कहाँ विजिबल होते हैं, जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, लोकल वेरिएबल्स आर इम्प्लीमेंटेड एट स्टैक लेवल इंटरनली, दैट लीव दिस पॉइंट। स्टैक एक्चुअली क्या होता है, स्टैक इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी, तो लोकल वेरिएबल स्टैक पे क्रिएट होते हैं। सो दिस इज द सिंपल थिंग, सो लीव दिस पॉइंट। Now next is there is no default value for local variable, already discussed, कोई इनकी default value नहीं होती है। So local variable should be declared and an initial value should be assigned before the first use। उनको use करने से पहले उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको initialize करना, that means initial value is must, that is to be provided by the programmer or by the user, right। Now in the next video, now whatever you feel means whatever you want to write, जो भी आपको मतलब जो भी पॉइंट आपको लिखना है, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम ऑल दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट, here is a method that declares a local variable named I and then initializes the variable before using it। So look at here, public static void main, and inside it वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ओनली, दैट मीन इनसाइड अ ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर एक मेन जो फंक्शन है उसका एक ब्लॉक हमने बनाया है, इन विच वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप आई एंड इनिशियलाइजिंग द वैल्यू, एंड बिफोर यूजिंग इट व्हाट इज द यूज, एक्चुअली वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई हियर, सो दैट मीन इट इज इज यूज। एंड लोकल वेरिएबल्स क्या बोलते हैं कि लोकल वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूजिंग इट। तो हमने इसको इनिशियलाइज किया प्रिंट करने से पहले, वी आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ आई एज 0, सो देर इज नो प्रॉब्लम, right। Now in place of this, this is the second method, this is the first method how you can use local variable, this is the another method, that means in a single statement you can write here int I is equal to 0। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम पहले डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं दोनों, दैट मीन्स इन द टू वेज, दैट मीन्स इन द डिफरेंट लाइन्स और इन द सेम लाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, initialization। So in two lines we can do this, right, or in a single line we can do। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, declaration भी हो रहा है and initialization also, right। So this is for your local variable example। Now when you declare more than one variable, when you declare more than one variable in a single statement, each variable can have its own initializer। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल x एंड y, टू वेरिएबल्स आर यूजिंग, सो इन दैट केस ईच वेरिएबल कैन हैव इट्स ओन इनिशियलाइज़र। दोनों के अपने अलग अलग इनिशियलाइज़र भी हो सकते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। लाइक फॉर x वी आर इनिशियलाइजिंग इट बाय 5, फॉर y वी आर इनिशियलाइजिंग इट बाय 10। Now next is when you declare two class or instance variable in a single statement but use only one initializer, then the initializer applies only to the last variable in the list। Like here we have written x comma y is equal to 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा ना कि x is equal to 5 and y equal to 5, no,
है ना. If you're using two variables in a single statement and you are using only one initializer value, then only the last variable will get that value. Last variable का मतलब only y will get this value 5, not x. Fine. Moving on to next. Here it is. Local variable marked by braces. So look at here, this opening and closing bracket, and you are declaring it inside, that means you are using a local variable inside a if block. आप सिर्फ if के अंदर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है. तो आपने क्या लिखा है, if tax rate is greater than 0 then tax amount. Now this is a local variable. Why? Because you are declaring it inside a if block. आप ये if block create किया, इसके अंदर यहाँ पे आप statements कुछ लिख रहे हो. So here when you will declare any variable, it will be considered as local, right? Now next is, now one example is there. Yes, local variable example. Now class test and opening bracket void age, one function we are making, and int age is equal to 0. Now which type of variable is this? This is a local variable because you are initializing or that you are declaring it inside a function. एक method के अंदर declare कर रहे हो, so it is a local variable, right? Now we are initializing it with 0. It is must to initialize the value. You can initialize the values in two ways, means you can write it like this, int age and age is equal to 0. This is also the way you can write, or in a single line you can write it. Then you are incrementing the value of age by 7 and you are going to print here age is equal to this. Now public static void main test object you are going to make here, test is equal to new test, and test dot age. When you will call this function age, your compiler will get move on to this line here. Your control, not compiler, sorry, your control will move on to this line public void age, and age की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0. सो 0 + 7 इज 7. 7 कितना हो गया, आपकी अपडेटेड वैल्यू हो गई किसकी, एज की. सो हेयर द आउटपुट विल बी व्हाट, एज इज 7, एंड नाउ यू कैन चेक हियर, दिस इज द आउटपुट, एज इज 7 there, right? Now look at here, if I will do some changes in the same program, if some changes will be there, like what is the change here, int age is equal to age plus 7 and age is this, then same line here. Now when you will call this function test dot age, so your control will move on to this line and int age. Now you are incrementing the value of age by 7, but what is the initial value of this, don't know, because, and we know what, it is a local variable and it is must to initialize the local variable, yes or no. हमें पता है कि अगर local variable है तो उसको initialize करना भी must है, और हमने यहाँ पे इसको initialize किया नहीं है. Look at here, same program as previous, but in this program we use local variable age without initializing it, so it would throw compile time error. ये आपको क्या compile time error देगा, you will get the error as this is the error that you will get, test java 4 variable number might not have been initialized, यानी कि ये initialize नहीं हुआ है. So this is your error here, right? Now next, moving on to your instance variable. Now this one instance variable we will discuss in the next video. So up to here I hope it's clear to you up to your local variable. Then in the next video we will discuss about instance and static variable together. So up to here it's enough for you, right? And make proper notes of this. In your book only two variables are given, that is your instance and class variable, but you should know the different types of variables here. But in your book actually only these two are given, instance and class variables, right? So that's it for today. Thank you.